आते हैं, जिसमें कि फर्स्ट 5 चैप्टर्स का थोड़ा इंट्रो 11th क्लास में दे देते हैं। स्ट्रेट लाइंस, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला। वेक्टर्स एंड 3D ये 12th के चैप्टर हैं। हम इसको थोड़ा डीप में पढ़ेंगे फॉर दी एडवांस। और जो मैं बुक सजेस्ट करूँगा फॉर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दैट इज़ एडवांस प्रॉब्लम्स इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बाय विकास गुप्ता। दिस इज़ द बुक यू मस्ट रेफर, you must solve this book. So this is the book, Coordinate Geometry Advanced Problems by विकास गुप्ता। इस बुक में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो एडवांस में आती हैं। बेसिकली एडवांस के क्वेश्चंस, एडवांस में किस टाइप की क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। वो सब इसमें काफ़ी सारी, हर चैप्टर से रिलेटेड अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। सो यू मस्ट गो थ्रू विद दिस। So today we are going to start with the straight lines, and one more thing is that मैं जो वीडियोस में कवर करूँगा अभी, तो इनमें पूरा चैप्टर कवर नहीं करूँगा, थोड़ा टॉपिक समझाऊँगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि टॉपिक अच्छा है और समझ में आ रहा है और एडवांस के लिए इसको और ज़्यादा प्रिपरेशन करनी है अगर टॉपिक की, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, हम उस टॉपिक पे पार्ट 2 भी लेकर आएंगे। सो स्ट्रेट लाइन से स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेट लाइंस में कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जो 10th क्लास में पढ़ा दिए जाते हैं, 11th में भी उनको रिवाइज करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल डिटर्मिनेंट्स में भी पढ़ाया जाता है, डिटर्मिनेंट्स की एप्लीकेशन होती है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़ाते हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। फिर भी इनका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। स्ट्रेट लाइन या पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब भी हम सॉल्व करते हैं तो हमें 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम का आइडिया होना चाहिए, क्योंकि सारी जो ज्योमेट्री है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम पे ही रिवॉल्व करती है, इसी के अराउंड, जिसमें ये एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस। दिस इज़ द पॉजिटिव वाई एक्सिस, दिस इज़ द नेगेटिव, एंड दिस इज़ negative x-axis, this is the origin, and these are the points on the axis. So if we have to find the distance between the 2 points in the coordinate system, let's say one point lies here, this is x1 comma y1, and the second point lies here, this is x2 comma y2, and we have to find the distance between these points. And this is the distance formula. So how we can find this? The distance formula will be equal to between these points. Let's say this is A and this is B. So the distance of AB will be equal to x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square. Right? How we can find this? Okay, so this is the x1 comma y1. So we will draw a line that is parallel to y-axis, and we will draw a line from this point that is parallel to x-axis, right? So this is the point in the triangle, and this is the right angle triangle. So this is the point where the x coordinate will be equal to the coordinate of this point, because x का distance यहाँ से और यहाँ से same है. So this point x1, and the y distance will be equal to this, and y distance will be this. So इसका y distance y2. So this is x1 comma y2, right? So this distance from the Pythagoras theorem we know that this is the hypotenuse. Hypotenuse का square will be equal to base square plus perpendicular का square. This is base, this is perpendicular, or you can switch either way. This can be base or this can be perpendicular until there is not any angle given for the trigonometry. This is hypotenuse. So hypotenuse will be the distance of AB, right? And distance square will be equal to base square, that is
the distance between this, and the distance of this means the length of this base will be equal to what? The length from origin to this point B is this coordinate, that is x1, right? x2, sorry, this is x2, so this is x2, and the length from the origin to this point will be this, that is the coordinate of this point A, that is x1. So this length will be come out to be x2 minus x1, right? So base का square will be x2 minus x1 का whole square plus perpendicular का square, perpendicular is this. So what is the length of the perpendicular? The length this minus this, right? So this length will be the by coordinate of this point, that is y1, minus this length. We have to find the length of the perpendicular, so we have to subtract this length from the overall length. So this length is equal to the by coordinate of this point, right? Because these are at the same height, so the by coordinate of this point will be by 2 square, right? So distance will be equal to under root x2 minus x1 square plus by 1 minus by 2, or you can write by 2 minus by 1, because there is square and minus 1 ka square is that is equal to 1, so you can write in either way. So this is the distance formula, how we can find the distance between the 2 points in the coordinate system, and these points can be located at anywhere. Maybe A point lies here and B point lies here, still the formula will be same, will come out to be same. I just have considered these points are here because it will be easy to derive the formula. So this is the distance formula, and the section formula is what? Section formula is when a line is divided in some ratios. For example, this line in the coordinate system AB, and this coordinate is x1 comma y1, and this coordinate is x2 comma y2, right? So for example, this is the point where we are dividing the line in the ratios, that is m1 ratio m2. It means what? That let's say this is the point K, and coordinates of this point are h comma k. Okay, so AK upon AB, AK upon KB, BK, right, will be m1 upon m2, right? So this is the ratio that we are dividing the line AB at point K. So the coordinates of the point K, HK, we have to find these. So H will be equal to m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2, and the coordinate of the point K will be equal to m1 by 2 plus m2 by 1 upon m1 plus m2, right? Let's say there is another point, that is P, that lies here. This is the external point, and we are, let's say the coordinates of these points are alpha and beta, and the line is now divided externally in the ratio m1 ratio m2. Externally dividing means what? That P of A, PA upon PB, PA upon PB is equal to m1 upon m2. इसका मतलब है लाइन को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहे हैं हम m1 रेशो m2 में. Okay, so when we divide a line, we just have to write down the points like this, length like this. The point जहाँ से हम जिस लाइन को डिवाइड कर रहे हैं वो पॉइंट एंड द स्टार्टिंग पॉइंट, दैट इज PA, उसके बाद डिवाइडेड बाय दैट पॉइंट at which we are dividing, and the second point PB. Okay, for example KA upon KB, right? So this is PA upon PB equal to m1 upon m2. Now we are dividing the line in the externally. So the coordinates of the point P, alpha beta,
alpha will be equal to m1, okay, m1 x2 minus m2 x1 upon m1 minus m2, right? And the coordinates of the point beta are m1 by 2 minus m2 by 1 upon m1 minus m2. सो अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ कैसे हुई है, सो हम इसको भी, जैसे हमने डिस्टेंस फार्मूला को ड्राइव करा है, इसको भी हम 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम पर बना सकते हैं लाइन को, और m1 रेसो m2 में डिवाइड करके हम वहाँ से इनकी लेंथ को ये जो लेंथ है इनको कंपेयर करके फाइंड आउट कर सकते हैं. सो द फॉर्मूला will be this. Okay, so this is the basic concept, very basic concept we have studied in 10th class. And the another one, that is area. So area may be of the area of the triangle or area of the polygon. Polygon means any number of sides. Okay, so we have to find the area in the coordinate geometry. So for example, we have to find the area of the triangle. So we have also studied in the chapter determinants that a application of determinant, that area of triangle can be easily founded by making a determinant of the points. For example, there are 3 points in the coordinate system, A, B and C, right? So this is the triangle that is formed, x1 comma x2, by 1, x2 comma by 2, x3 comma by 3. These are the coordinates of the point A, B, C respectively. We have to find the area of the triangle ABC. So the determinant formula says that the half of the determinant of this 1, 1, 1, x1, x2, x3, y1, y2, y3. So this is how we can find the area of the triangle ABC. So if you are wondering about that how this thing comes as the area of this triangle ABC, because when we expand this out, so it forms in such a way that the when we derive this in the coordinate system by just applying some mathematics, simple mathematics, basic understanding of the mathematics, if we apply that and the area of this triangle we find out in the coordinate system, and the formula that will be the exactly equal to when we expand this thing. Okay, so this is just the idea of this determinant doing this. And इसमें एक क्वेश्चन जो बनता है बेसिकली वो just it can be given that the points are the collinearity of the point. Collinear means the points are in the same line in a linear form. Okay, so for this condition we know that the points, if a points all the 3 points form in the same line, then there will be no triangle form. So the area of the triangle will be equal to 0. So we just put this thing equal to 0. Okay, so now the second thing is the area of the polygon. Polygon means there can be any number of sides and all of them are equal. And if we have to find the area of this thing, so let's say these are the points A1 comma A2 comma A3 comma A4 till AN, right? And these points are taken in the order. Order means if we are considering this point, then the A1, then this should be the A2, this should be the A3, this is not the way like this is A1, this is A2, this is A3. So it should be in a proper order. So if we put in the proper order, then the area of this polygon will be equal to half determinant of x1, x2, x3, xn
this is the x coordinate. These are the x coordinates of the point, all the points that are taken in an order, and this is the by 1, by 2, by 3, by n. So we just have to find out this thing. Okay, and how it is calculated? When we expand this thing out, this will come out to be, wait a minute, so let's expand this on this side only. This is expanded like this, that half, this is the modular sign we are putting because the area can only be positive. So if the answer is coming in the negative, so the modular sign will automatically convert it into the positive. So when we expand out this thing, this will come out to be equal to x1. This x1 will be multiplied by the by 2, this x2 will be multiplied by the by 3, and this thing goes on, and the last xn will be multiplied by the by 1. Okay, so this is x1 into by 2 plus x2 into by 3 plus till xn into by 1 minus, now the thing is that we have to multiply the x2 to the by 1, x3, x2 to the by 1, x3 to the by 2, x4 to the by 3, and last the x1 to the by n. Okay, first we are multiplying the x with all the by's, and then the by with all the x. So this is come out to be by 1 x2 plus by 2 x3. Okay, this way. So this will go till by n x1, right, mode. So this is the thing that came out to be the area of the polygon, area of any polygon. Okay, so we just have to find out like this. सो ये 3 जो टॉपिक हैं बेसिक टॉपिक हैं बिल्कुल, आज हम बस इन्हीं को देखेंगे। अगर आप चाहते हो कि आगे और जो एडवांस टॉपिक्स हैं मैं उन पर वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और हम चीज़ें पढ़ेंगे जैसे कि ट्रायंगल के अंदर जो जितने भी पॉइंट्स होते हैं, सेंट्रोइड, ऑर्थोसेंटर, सर्कमसेंटर, इन सेंटर, एक्स सेंटर, ऑल दीज पॉइंट्स, हाउ कैन वी फाइंड ऑल दीज पॉइंट्स एंड व्हाट आर द रिलेशंस बिटवीन ऑल दीज पॉइंट्स। इन पे क्वेश्चन आ जाते हैं मेंस में, मेनली मेंस में इस पे ज़रूर क्वेश्चन आता है। इन पॉइंट्स में कोई भी रिलेशन पूछ सकता है, कोई भी रिलेशन दे के पॉइंट्स में कुछ भी फाइंड आउट करवा सकता है। और उसके बाद हम देखेंगे और जो बेसिक चीज़ें हैं लाइक स्लोप एंड द लाइंस और इक्वेशन ऑफ द लाइंस एंड सम एडवांस टॉपिक्स दैट आर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, right, pair of straight lines also asked in the mains, and there is a lot more concept, that is parametric form of the line. Parametric form is the most important concept that anyone must do for advance. If he is preparing for the advance, then parametric form is the most important thing, because parametric form will not be used only in this chapter, this can be used in further in the mathematics. And one important thing that I want to share with you about the section formula is that let's say there is a point P that divides the line AB internally in the ratio m1 ratio m2, and there is a point Q that divides the line externally, this line, same line AB. This is the P point, this is the Q point, this divides internally, this divides externally in the same ratio m1 ratio m2. Then these the points P, Q, these will be the harmonic conjugate. Harmonic conjugate means what? That this will form HP, that is harmonic progression. That means what? That means just that the 2 upon AP, 2 upon AP. So this is 2 upon AP will be equal to 1 upon this is 2 upon AB, right? So this is 2 upon AB equal to 1 upon AP plus 1 upon AQ.
And how this thing will come? We know that the harmonic progression HP is what? This is the same like AP, but in the inverse form. Means A, B, C, D. If these numbers are in AP, then 1 upon A, 1 upon B, 1 upon C. These numbers will be in HP, right? So from here we can we say that if the line AB is divided internally and externally by the points P and Q in the same ratio, then this will form a harmonic conjugate and the formula will be equal to this. इस चीज़ पे क्वेश्चन आ सकता है ज़रूर मेंस में, एडवांस में नहीं पूछेगा। अभी जो हमने टॉपिक पढ़े हैं इनमें बेसिकली मेंस में ही क्वेश्चन आते हैं, जनरली एडवांस में नहीं आते हैं। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, इनका यूज़ हो सकता है बेसिकली जो एडवांस में और प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें हम इनको अप्लाई कर सकते हैं। एडवांस की जो लेंथी प्रॉब्लम्स हैं हो सकता है उसमें ये एक छोटा सा पार्ट हो जहाँ पे हम अप्लाई करना पड़े हमें, ताकि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें पूरा। और अगर हमें ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी। सो दीज आर द all three basic concepts that we have learned today. Area of the triangle, polygon and section formula and the distance formula. So अगर आपको समझ में आया है सही में तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि आगे मैं फर्दर और जो एडवांस टॉपिक्स हैं उन पर वीडियो बनाऊं स्ट्रेट लाइंस के, जैसे कि एक होमोनाइजेशन ट्रिक होती है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एडवांस प्रॉब्लम्स, और हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। अभी हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं आज, क्यों? क्योंकि इन पे जनरली एडवांस में क्वेश्चन नहीं आते हैं। मैंने जितना बताया है आपको, जैसे पॉइंट ऑफ कोलिनियरिटी, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए, और दिस द हार्मोनिक कॉन्जुगेट, बस इसी पे अगर क्वेश्चन आया तो आ सकता है, बाकी नहीं आएगा। सो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन बनेगा, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में और भी चीज़ें, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, these all things are the connected, because these all circle through from circle to hyperbola, these all are connected, and these all are connected to the also the straight line, because this is the basic thing of the coordinate geometry, because all are the conic sections. So हम इनको 1 by 1 कवर करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए और उस टॉपिक को किस लेवल पे आप चाहते हैं कि हम उसको कंसिडर करें। आप वी विल डेफिनेटली लुक एट दिस। सो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट एंड प्रैक्टिस हार्डर।